So students, as we have completed 4 sessions of integration, in first session we have read simple formula method. In session 2 we learned the substitution method. In session 3 we understand how to use the trigonometric identities, and then we apply the integration. And in session 4 we have learned 6 formulas and also 3 more formulas, which is for 7.7 exercise. Now we are moving towards exercise 7.5, which is our session 5. In exercise 7.5 of integration, we are going to apply partial fraction. Before going to partial fraction, first we understand what is proper function and improper function. Proper function is the function in which degree of numerator is less than degree of denominator. Example, numerator is x plus 1 and denominator is x plus 2. In this we can see that degree of numerator is 1 and degree of denominator is 2. So degree of numerator is less than degree of denominator. Second is improper function. Improper function में degree of numerator is greater than equals to degree of denominator. X square, example, x square plus 1 divided by x square plus 2. Degree of numerator is also 2 and degree of denominator is also 2. As degree of numerator and denominator is same, so this is a improper function. In this, degree of numerator is 3 and degree of denominator is 2. This is also a improper function. What we have to do, by observing the function whether it is proper function or improper function, in the proper function we directly apply the partial fraction. अभी हम सीखेंगे कि how we will apply partial fraction, but सबसे पहले क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करना होगा दैट फंक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन. प्रॉपर फंक्शन में we will directly apply the partial fraction, and in improper function first we apply long division, then we apply partial fraction. So first we understand how to apply the partial fraction. There are some forms which are given to us, and उस फॉर्म में हमको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है. तो हम इसको एज अ फॉर्मूला मान सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में देखें तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. सो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2. सो दिस इज अ प्रॉपर फंक्शन. और अगर प्रॉपर फंक्शन है तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर में हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं, और अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी. सेकेंड फॉर्म, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 3, पर सभी लीनियर है. सो वी विल राइट a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी. यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं इन सम और डिफरेंस, और अगर वो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा देन इट विल बी इजी टू अप्लाई इंटीग्रेशन इन ऑल पार्ट्स. थर्ड फॉर्म इज, अगर डिनोमिनेटर, पहले तो हम यहाँ चेक करें तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर x, और यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर, सो दिस विल बिकम x क्यूब. सो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1. So this is proper function, and here we see that x plus a linear है, so we'll write a upon x plus a. For degree of denominator में क्या है, linear का square. तो linear factor पे जब square होता है so we'll write in 2 parts b upon x plus b plus c upon x plus b whole square. तो इस तरह के function पे हमको partial fraction ऐसे apply करना है. Now px plus q upon x plus a x square plus bx plus c which cannot be factorized. यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को
तो हम उसके दो फैक्टर्स लिखेंगे, लाइक x प्लस बी एक्स प्लस सी, दो फैक्टर हो जाएंगे। फिर हम उस पर लीनियर वाला फॉर्म ही अप्लाई करेंगे, पर जो क्वाड्रेटिक हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो whenever in denominator there is a quadratic equation, in numerator we will take linear function. When in denominator there is a linear function, then we take in numerator constant. Let's understand how to apply the partial fraction to proper function. In this, starting with the question first, x upon x plus 1 x plus 2. Here we can see that degree of numerator is 1 and degree of denominator is 2. So now x upon x plus 1 into x plus 2, this will be equals to, क्योंकि denominator में linear है, so partial fraction कैसे apply होगा, it will become a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now what we have to do, we have to find the value of a and b. So I'll take LCM in denominator. मैंने denominator में LCM लिया x plus 1 x plus 2. So this x plus 2 multiply here and this x plus 1 multiplied with b. So we'll get x equals to a upon x plus 2 plus b upon x plus 1. As ये हमारा first question था, इसलिए मैंने LCM लेके show करके दिखाया. Otherwise मैं x plus 1 x plus 2 को पहले ही कैंसिल कर दूंगी. I directly write x equals to a into x plus 2 plus b into x plus 1. Now, how to find the value of a and b? a and b की वैल्यू फाइंड करने के लिए one method is by comparing the coefficient, but another easy method is कि a के साथ फैक्टर क्या है, x plus 2 and b के साथ x plus 1. So if I take, as this is true for all values of x, so it is easy to calculate the values of a and b if I take x equals to minus 2. Why? अगर मैंने x को minus 2 लिया, then this factor will become 0. This will become 0, so I put x equals to minus 2, b into minus 2 plus 1. This is minus 1, so I'll get value of b as 2. Similarly, here this factor will become 0 when I'll take x equals to minus 1. So when I am putting x equals to minus 1, this will become 0. So minus 1 equals to a into minus 1 plus 2 is plus 1. So I'll get value of a is minus 1. Here x upon x plus 1 x plus 2 is equals to. Now I can write a is minus 1 and b is plus 2. अब फिर से एक बार इसमें LCM लेके देखना, x plus 1 x plus 2. So minus x minus 2 and here it will become 2x plus 2. So we'll get numerator as x only. So हमने क्या किया है, हमने इसको convert कर दिया in sum or difference. अब when we do integration both side, then it will become easy to integrate the functions which are in addition. तो हम एडिशन में सेपरेट इंटीग्रेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं. So by applying separate integration to both the terms, we'll get dx upon x plus 1. dx by x, integration is log mod x, and dx by x here also log mod x. So हमने हमारे फंक्शन को जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में था, फर्स्ट वी कन्वर्ट इन सम और डिफरेंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, and then it is very easy to do integration to separate terms. Taking another example, in this we can see that there are three linear factors. So 3x minus 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3. First in this we can see that numerator की degree 1 है and denominator की degree is 3. So it is a proper function. So applying partial fraction directly, we get a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. क्योंकि तीनों linear है, so I can write like this. Now by taking LCM will come x minus 1 x minus 2 x minus 3. So a के साथ क्या multiply हो जाएगा, x minus 2 x minus 3, b के साथ x minus 1 x minus 3 और c के साथ x minus 1 x minus 2. So in this way, we'll get 3x minus 1 equals to a into this plus b into this and c into this. क्योंकि जब LCM लेंगे तो डिनोमिनेटर गेट कैंसिल. अब बहुत इजी है ये डिसाइड करना कि हमको x की क्या वैल्यूज लेनी है. सो फैक्टर्स
अगर मैं देखूं तो x-1 फैक्टर है, x-2, x-3 है, 3 फैक्टर्स है. सो फर्स्ट आई विल टेक x इक्वल्स टू 1. जैसे ही मैंने x को 1 लिया, दिस पार्ट विल बिकम 0 एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बिकम 0. सो व्हाट विल लेफ्ट? 3 into 1, तो 3 minus 1, a into 1 minus 2, 1 minus 3. So minus 1 into minus 2, it will become plus 2a. So 2 by 2 will become 1. So we'll get value of a is 1. When now x is 2, जब x को 2 लेंगे तो this part and this part will become 0. When I'll put x equals to 2, so 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is minus 1. So this will become minus b. And here when I'll put x equals to 2, so 6 minus 1 is 5. So b will come minus 5. Similarly, we'll take x equals to 3. Then this two factors will become 0. This two part will become 0. 3 3s are 9, minus 1 is 8, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1. So we'll get c equals to 4. Now we put this value of a, b and c in this partial fraction. So a is written as 1, b is minus 5 and c is plus 4. So हमने इस फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया in 3 पार्ट. Now it is very easy to apply separate integration to each term. So by integrating each term separately, again integration of dx by x is log mod x, integration of dx by x is log mod x minus 2 and dx upon x minus 3 is log mod x minus 3. So जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे, सो विल राइट a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c. एक और लीनियर फैक्टर होता तो प्लस d अपॉन x माइनस d. इन दिस वे वी कैन गो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस वी कैन सी दैट देयर इज अ लीनियर फैक्टर एंड लीनियर का स्क्वायर इज देयर. So how we will apply the partial fraction? First we will check that degree of numerator is 1 and degree of denominator x square into x होगा, so x cube. The numerator degree is less than denominator, so directly we will apply the partial fraction. Now there is a linear पे square factor है. So first we have to write this in two parts, a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square. Linear square can be written in two parts, and third is c upon x plus 2. So a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square plus c upon x plus 2. Now again we will take LCM. So LCM will be x minus 1 whole square into x plus 2. This a will multiplied with x minus 1 and x plus 2 when we take LCM. Here b into x plus 2 ही आएगा और c into क्या आएगा, x minus 1 whole square. तो एलसीएम जब हम लेंगे विच इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इन दिस वे वी विल गेट. नाउ अगेन विल सी दैट देयर आर फैक्टर्स x माइनस 1 एंड x प्लस 2. सो फर्स्ट आई विल टेक x इक्वल्स टू 1. जैसे ही मैंने x को 1 लिया, दिस पार्ट विल बिकम 0 एंड दिस ऑल्सो विल बिकम 0. सो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, वी गेट 1 इक्वल्स टू 3b. सो b इज 1 by 3. When x is minus 2, then this 2 part will become 0. So this is minus 2 equals to c into minus 2 minus 1 is minus 3 square, which is 9. So we'll get c equals to minus 2 by 9. And then अब मैं ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं देख सकती जिससे कोई फैक्टर 0 होगा, तो सबसे इजी वैल्यू टू पुट x इज 0. सो अब मैंने x को 0 पुट कर दिया क्योंकि 1 और minus 2 तो हम पुट कर चुके थे. Now I'll put x equals to 0. When we put x equals to 0, we will get 0 minus 1. Minus 1, 0 plus 2, 2. So it will become minus 2a. 0 plus 2 will become 2b and 0 minus 1. So minus 1 square is plus 1. So c. Putting value of b and c in this equation, we will get value of a. Value of b is 1 by 3. So this will become 2 by 3. Value of c is minus 2 by 9. So taking 2 common, it will go in 0. So left with minus a plus 1 by 3 minus 1 by 9. So a will become 1 by 3 minus 1 by 9, which is 2 by 9. So after substituting the value of a, b and c,
we'll get 2 by 9 upon x minus 1 plus 1 by 3 upon x minus 1 whole square minus 2 by 9 upon x plus 2. Now we will do integration on both sides. Here we can apply separate integration to each term. Now dx upon x minus 1 will be log mod x minus 1. Now this is x minus 1 to the power minus 2. So integration of x raised to minus 2 is x minus 1 to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. And here again dx by x will be log mod x. Now it will become x minus 1 to the power minus 1 minus 1. So this is minus 1 by 3 upon mod x minus 1. Sorry, x minus 1. So x minus 1 to the power minus 1 can be written as 1 upon x minus 1. Here 2 by 9 can be taken common from these two terms. So log m minus log n is log m by n. So this will become 2 by 9 log mod x minus 1 upon x plus 2 minus 1 by 3 x minus 1 plus c. So till now we have covered three type of questions, in which in first one there are two linear factors, in second there are three linear factors, and in third linear factor पे square is present. Now we are moving towards the next question, in which 1 minus x 1 plus x square. Now here we can see that here is a quadratic equation and this quadratic equation cannot be factorized. x square plus 1 के हम factors नहीं लिख सकते. And now when we start this question, the first and most important thing is that coefficient of x should be positive. So I am taking minus sign common. So this will become 2 upon x minus y x square plus 1. Now we can see that this quadratic cannot be factorized. So how we apply the partial fraction? 2 upon x minus 1 x square plus 1 is equals to a upon x minus 1. X minus 1 is linear factor. So a upon x minus 1 plus this is quadratic. So quadratic में ऊपर हमको क्या लेना होगा? Linear factor, that is bx plus c. So by taking LCM, x minus 1 x square plus 1 will be LCM. So this a get multiplied with x square plus 1 and this bx plus c get multiplied with x minus 1. So we get 2 equals to a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1. Now we can see that one factor is x minus 1. So I am substituting x equals to 1. So this part will become 0. We'll get 2 equals to 1 plus 1 is 2. So 2 equals to 2a. So we'll get a equals to 1. Now we put x equals to 0. क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए कोई फैक्टर 0 होगा. We know x square plus 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है. So अब मैंने ऐसे ही कोई सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 0. सो मैंने x को 0 पुट किया तो LHS विल बी 2. 0 प्लस 1 विल बी a. 0 पुट करा तो दिस विल बिकम 0. 0 माइनस 1 इज माइनस 1. सो इट विल बिकम माइनस c. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज 1. सो विल गेट वैल्यू ऑफ c इज minus 1. 1 minus 2 is minus 1. Now let's take another value. We can take any value of x. You can put minus 1, minus 2, plus 2, whatever you want. So I am putting x equals to 2. By substituting value of x equals to 2, we get 2 square plus 1, that is 5a. Putting 2, so 2b plus c and 2 minus 1 is 1. So here we get 2 equals to 5 because value of a is 1. 2b and value of c is minus 1. So from here we'll get value of b, that is coming out to be minus 1. So by substituting the values, 2 upon x minus 1 x square plus 1 will become a, which is 1 upon x minus 1 plus b is minus 1. So minus x minus 1 upon x square plus 1. So now 2 upon x minus 1 x square plus 1 can be written as a upon x minus 1 plus b upon bx plus c upon x square plus 1. So a, b, c value put kar di. Now we can do separate integration to each term. So integration of 1 upon x minus 1. Here this minus sign is here and this x upon x square plus 1 separate kar diya and 1 upon x square plus 1 bhi separate kar diya. So we are doing integration to each term.
Now here we can see dx by x will be log mod x and dx upon x square plus 1 is tan inverse x. और ये जो हमारा पार्ट है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैंने I मान लिया. ये हमने एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व किया है. वेन एवर इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्स स्क्वायर और इन न्यूमरेटर वी हैव x, so we take x square as t. So I am taking this x square plus 1 as t. So 2x dx will become dt. So x dx will be dt by 2. So I will be equals to x dx is written as dt by 2 and x square plus 1 is t. So dt by 2t, which is 1 by 2 log mod t, and t can be written as x square plus 1. So by putting the value of I here, we'll get negative of log mod x minus 1 minus 1 by 2 log mod x square plus 1 minus tan inverse x. So multiplying the minus sign inside, we'll get this. Taking next question, in this integration of phi x upon x plus 1 x square minus 4. Here we can see that this x square minus 4 is again a quadratic equation, but this quadratic can be factorized. So अगर वो factorize हो सकती है तो हमको factorize करना ही है. So x square minus 4 can be written as x minus 2 x plus 2. Now we will apply the partial fraction. Here we can see that we are getting 3 factors in multiplication. So this will become a upon x plus 1, b upon x minus 2, c upon x plus 2. तो ये 3 linear factors हो गए हमारे. तो we will apply partial fraction. Again we take LCM. As we take LCM, phi x is equals to a into this x minus 2 into x plus 2 plus b into x plus 1 into x plus 2 and c into x plus 1 into x minus 2. क्योंकि हम जब LCM लेंगे तो इसमें ये टर्म तो है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी. इन दिस विल मल्टीप्लाई इट विद x प्लस 1 एंड x प्लस 2 एंड सो ऑन. तो ये हमारा सेम क्वेश्चन हो गया है जिसमें 3 लीनियर फैक्टर्स हैं. नाउ 1 बाय 1 वी टेक वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले x को -1 ले लिया, देन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज -2. व्हेन आई टेक x इक्वल्स टू -1, दिस 2 पार्ट विल बिकम 0. So putting x equals to -1, this will become -5. -1 minus 2 is -3 and -1 plus 2 is +1. So a will be 5 by 3. When x is 2, so this is 4 and this will become 3. And this 2 part will become 0 when we put x equals to 2. ये 0 हो जाएगा, ये 0. So we'll get 10 by 12, which is 5 by 6. And putting x equals to -2, this 2 will become 0. So we get -2 plus 1 is -1, -2 minus 2 is -4. So plus 4c is -10. We'll get c equals to -5 by 2. So substituting the value of a, b and c, we get 5 by 3 upon x plus 1 plus 5 by 6 upon x minus 2 minus 5 by 2 upon x plus 2. Now integrating all parts separately, we'll get integration of dx by x is log mod x. Here also 1 upon x minus 2 integration will become log mod x minus 2 and 1 upon x plus 2 integration is log mod x plus 2. So important part in this question is that अगर quadratic equation है denominator में but it can be factorized, so पहले हमको उसके factors ही करने होंगे. If it cannot be factorized, तो फिर हम ऊपर क्या लेंगे partial fraction में linear factor bx plus c form. Now moving towards the next question, question number 12, which is integration of x cube plus x plus 1 upon x square minus 1. In this we can see that degree of numerator is greater than degree of denominator. अभी तक हमने जितने भी questions करे, in all degree of numerator is less than degree of denominator. तो वो proper functions थे. We directly apply the partial fraction. In this first we have to apply long division method. लॉन्ग डिविजन मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को क्या करना है? डिवाइड. सो स्टार्टिंग डिविजन विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. सो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग टर्म एक्स. सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स. दिस माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. दिस गेट कैंसल्ड. एक्स प्लस एस विल बी 2x प्लस 1. अब हम यहाँ देखेंगे तो ये तो
x है यहाँ x स्क्वायर, सो इससे फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे. नाउ वी विल राइट दिस फंक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते थे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. सो आई एम राइटिंग it as x which is quotient plus remainder divided by x square minus 1. अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगी I'll get x cube minus x plus 2x plus 1 which is nothing but x cube plus x plus 1. तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया. नाउ वी विल डू इंटीग्रेशन सेपरेटली. दिस x dx plus 2x plus 1 upon x minus 1 x plus 1. Here it is a quadratic equation but it can be factorized as x minus 1 x plus 1. Integration of x is x square by 2. Now in this part we will apply partial fraction. क्यों? क्योंकि degree of numerator now is less than degree of denominator. Numerator की degree 1 है and denominator की degree 2. So applying the partial fraction 2x plus 1 upon x minus 1 x plus 1, this will become लीनियर फैक्टर्स है. सो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1. टेकिंग एलसीएम, सो a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1. नाउ अगेन देर आर टू फैक्टर्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1. सो I'll put x equals to minus 1. When I put x equals to minus 1, this factor will become 0. And when I put x equals to 1, this factor will become 0. So by putting x equals to minus 1, this will become 0. So we'll get minus 2 plus 1 which is minus 1 upon minus 2. So we'll get a equals to 1 by 2. Similarly by putting x equals to 1, this part will become 0. So we'll get 1 plus 1 2a, 2 plus 1 is 3. So 3 by 2 equals to a. So in place of a I am writing 1 by 2, in place of b I am writing 3 by 2. Again we can do separate integration. So by applying separate integration to both the terms, integration is very easy. 1 by 2 constant will be taken outside and dx upon x is again log mod x minus 1 and dx upon x plus 1 is log mod x plus 1 plus c. Taking one more example, 3 sin phi minus 2 cos phi, phi minus cos square phi minus 4 sin phi. अभी हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 आई एम टेलिंग कि सब्सटीट्यूशन हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमको यहाँ आइडेंटिफाई होना चाहिए दैट व्हेन वी टेक साइन फाई इक्वल्स टू टी, कॉस फाई डी फाई विल बिकम डी टी. So our question will convert in form 3t minus 2. In place of sin phi we will write t. Cos phi d phi will become dt. This is 5 minus cos square phi can be written as 1 minus sin square phi minus 4t. Sin phi is t, so this is 1 minus t square. So 5 minus 1 is 4 plus t square minus 4t. So हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 3t minus 2 t square minus 4t plus 4. This t square minus 4t plus 4 can be written as t minus 2 whole square. So t 3t minus 2 upon t minus t whole square. Now we will apply partial fraction. As we can see here is linear per square factor. So I'll write a upon t minus 2 plus b upon t minus 2 whole square. Now taking LCM we'll get a into t minus 2 plus b. Now I can put t equals to 2, so I can get value of b and putting t equals to 0 get a. पर मैंने यहाँ पे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कर दिया. यू कैन डू एनी मेथड. सो 3t minus 2 is equals to a into t minus 2a plus b. So by comparing the coefficients of t, I'll get a equals to 3 and minus 2a plus b will be minus 2. Substituting the value of a, that is 3, will get value of b which is 4. So now this will become 3 upon t minus 2. Putting value of a which is 3 and value of b is 4. Now integrating both sides, it will become 3 upon t minus 2 plus 4 upon t minus 2 whole square. Again 1 by t dt. This will be log mod t. Now t minus 2 to the power minus 2. So integration will be t minus 2 to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c.
because integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here we get 3 log mod t minus 2 minus 4 upon t minus 2 plus c. Substituting the value of t will get 3 log mod sin phi minus 2 minus 4 upon sin phi minus 2 plus c. So this is our exercise 7.5, which is based on partial fraction.